अनुभवजनित ज्ञान के आधार पर आपको ये अब असल में जो ये त्रासदी हुई कई तरफ से, मतलब पहले हमारे यहाँ पहाड़ों में क्या होता था कि बारिश से पहले लोग डाला गुल कहते हैं, मैंने मेरे गांव के ऊपर से जंगल है तो वहाँ गुल बना देते थे जिससे गांव में पानी ना आए। मैंने इस बार केलाघाट में जो हुआ वो तो हुआ ही, लेकिन गांव में भी बहुत नुकसान और अभी नहीं 70 के बाद जो मैंने बताया। और पहले लोग मकान भी कैसे बनाते थे, उनका हिमालय के साथ जो संबंध था कि खानी मांगनी गाँव कहते थे, भूमि को मिट्टी को सूंघ करके वो बनवाते थे और गैरा इत्यादि निकाला अपने मकान के चारों। आजकल ये सारा लोगों की ओर से भी और व्यवस्था की ओर से भी, माने दोनों यदि नगर पालिका बन रही है तो उनको भी पानी का कहाँ निकास करना है ये कोई वो नहीं था। तो सवाल ये है कि ये कई प्रकार के हिमालय में जैसे पूरा केदारनाथ में गंगोत्री में 5 जून को गंगोत्री उत्तरकाशी में था और 6 जून को गंगोत्री में था। तो वहाँ पर जिस प्रकार से जैसे रोड का कंस्ट्रक्शन वो मिट्टी भी भगीरथी में गई है, उसके बहाव के कारण जो तबाही उत्तरकाशी में, तो वो 10 और 9 तारीख के उसमें इत्तेफाक से किसी पत्रकार ने मेरा वो लिख दिया था कि साहब ये तो त्रासदी होने वाली है, 5 दिन बाद हो। देवदार का इतना सुंदर जंगल कहीं है नहीं जो उस रास्ते में, तो वो पेड़ मतलब कारतूस के धमाके से जिस प्रकार से वो हो रहा है, तो एक तरफ से पूर्वानुमान जिसको कहते हैं, इसी प्रकार माना वो लेक थी जिस जो अपना तोरेवाली लेक, पिछले दिनों बाजा इंस्टीट्यूट वालों ने प्रदर्शन किया कि ये लेक ऐसे, मैंने कहा भाई 15 दिन पहले कहते आप तो लेक तो जो टूटी उससे जो नुकसान हुआ उसको तो नहीं बता सकते थे, लेकिन मानव हानि लोगों को ये कर। तो उन्होंने खैर कुछ बात कही, उनके जो डायरेक्टर गुप्ता जी थे और जो साइंटिस्ट थे। मुझे एक बात देख करके बड़ा आश्चर्य हो कि पिछले उन्हीं एक लेक पढ़ रहा था मैं भूटान के बारे में, वहाँ पर एक लेक था, उस छोराफरपी ग्लेशियर उसके नीचे लेक बन रहा था और वहाँ के जो लोग थे उन्होंने कहा ये लेक तो जो मोरेंडी को वो तक भाव करके पूरे उसको छोड़ दिए है और उसने पहले भी उसके बगल के लेक के काम नष्ट किया। तो लोगों ने क्या किया कि वहाँ कुछ सब बात उन्होंने उस लेक का मुआ खोल दिया जिससे कि वो उसमें जो बर्फ पड़ती है वो ओवरफ्लो न हो बल्कि वो निकलते रहे 4 मीटर फिर। अभी उनका लक्ष्य में फिर बाद में हम लोगों ने भूटान की यात्रा किया, वो नदी का जो देखा, तो यदि वो साइंटिस्ट वो संगठन यदि ये कहते कि तोराबाड़ी लेक फ्लो वाले होने वाली है और वो ठीक हमारे सिर के ऊपर, जैसे हमारे सिर के ऊपर कोई सांप खड़ा हो तो उनको बताना देना चाहिए। तो यहाँ पर रेड्डी जी है, मैं आपसे विशेष रूप से अनुरोध करूँगा कि एक जो जैसे जो विद्या एक तो हमारे जितने भी ग्लेशियर है और ग्लेशियर लेक कोई विभाग या उत्तराखंड सरकार या हिमाचल सरकार तो उसको कर नहीं सकती, उसको भारत सरकार जो है जैसे आपका भाटिया इंस्टीट्यूट है या ग्लेशियर वाले दूसरे तीसरे संगठन ग्लेशियर अभी मौसम में उतार चढ़ाव के कारण तो रहे कि ग्लेशियर तेजी के साथ पिघल रहे हैं और वो पिघल रहे हैं तो लेक भी बनेगी। तो इस प्रकार के संगठन उस पर निगरानी रखे और कहीं उसका देखा जोखा, और भारत सरकार में भी एक विभाग ऐसा हो या आपका जो अथॉरिटी है उसमें एक विंग आपकी ऐसी कि जो ये बताए कि चोरावाड़ी लेक जो है केदारनाथ के ऊपर है और इसमें यदि ऊपर से ग्लेशियर तो आप उसकी मारक क्षमता को तो नहीं रोक सकते और जो मानव हानि है उसको जरूर कम किया जा सकता। तो इस प्रकार का भारत सरकार को सोचना चाहिए कि जो पहले तो जितने भी लेक हैं पूरे हिमालय में, माने नॉर्थ ईस्ट से लेकर के अरुणाचल से लेकर के सिक्किम, ज़्यादातर सिक्किम में है, उत्तराखंड में है, इसी प्रकार हिमाचल में और अपने लियाला डाको जी, तो उसकी हमारे पास पूरी इन्वेंटरी जानकारी होनी चाहिए कि कितने लेक हैं, इनकी हालत क्या है और उन पर निगरानी रखें और निगरानी को धरती में लोगों तक पहुंचाने वाला
मंत्रालय में या आपकी अथॉरिटी में ये रहे, सावधान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को सावधान कर देती कि चोरावाड़ी लेक खतरे में है, तब वो यदि जिम्मेदारी न लेते तो आप उनको दोष दे सकते। नहीं तो आज इस प्रकार के भी एक इसकी आवश्यकता। तो इस तो सीख वाली बात है। मेरा एक दूसरा, मैं 1986 में जब गोदावरी में बाढ़ आई, मैं 87 में गया वहाँ गोदावरी की यात्रा के लिए। किसी ने मुझे एजेंसी, तब शास्त्री थे कलेक्टर, और उन्होंने मुझे एजेंसी एरिया में भेज दिया, तो पीपुल्स पावर ग्रुप का। मुझे तो कुछ पता चला नहीं, तो जंगल का उसका उसी समय मुझे लोगों ने बताया। तो 1977 में आपके आंध्रा में समुद्री तूफान आया, 10,000 के करीब लोग मारे। लेकिन जब 1990 में समुद्री तूफान आया, तब लोगों ने मुझे वो हम बुलाया था, गया तो उन्होंने कहा एजेंसी एरिया में नुकसान हुआ है, लेकिन समुद्र के किनारे नहीं हुआ। माने वार्निंग सिस्टम विकसित हो गया और लोग बचाए गए। तो मेरे दिमाग में एक बात लगातार तब से ही, मैंने जब प्रभात कुमार जी थे कैबिनेट सेक्रेटरी, उनको मिला था और हमने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का या वार्निंग सिस्टम का जो विकसित हुआ है, तो आप क्यों नहीं हिमालय के बारे में भी, क्योंकि सबसे संवेदनशील हिमालय का इलाका है, यहाँ वार्निंग सिस्टम डेवलप कीजिए। खैर उन्होंने कस्तूरी रंगन जी को बुला करके ऋषिकेश टू बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग टू केदारनाथ, ऋषिकेश से गंगोत्री और टनकपुर से मालवा तक का एक तरफ से मैपिंग करवाया, और उसमें देश की 12 संस्थाएं लगी थी और 50 से अधिक वैज्ञानिकों ने काम किया। और उसमें चिन्हित किया गया है कि जैसे मंदाकिनी का कि कहाँ पर कौन सा इलाका ओल्ड लैंडस्लाइड डिपोजिट वाला है, कौन सा एक्टिव लैंडस्लाइड। तो इस प्रकार से अध्ययन एक तरफ से उन्होंने किया। लेकिन दुर्भाग्य से जो यूजर्स है, माने चाहे DGPR हो या अपने जिला कलेक्टर हो या उत्तराखंड सरकार हो, इसी प्रकार का उस समय का अध्ययन अपना हिमाचल का भी करवाए। तो उनको उस मैपिंग क्या था, जैसे मंदाकिनी जो केदारनाथ में बहुत थी, उसमें किस प्रकार का ट्रीटमेंट होना चाहिए, मैनेजमेंट भी उसमें था। तो मेरा एक अनुरोध ये दिया प्रदेश सरकार के माननीय मुतु साहब यहाँ पर है और हमारे अथॉरिटी के उपाध्यक्ष जी यहाँ पर है, और रिसर्च की दृष्टि से आपका तो इस प्रकार की जानकारी, जो जानकारी हमारे पास है, क्योंकि हमारा तो ये भी मानना है कि जैसे भूगर्भित कहते हैं कि मालपा से लेकर के तो पूरा का पूरा MCT वाला इलाका, माने मुख्य केंद्रीय धन, और हमारे हिमालयी इलाके में जो मुख्य केंद्रीय धन है वही ज़्यादा नुकसान है। हमारा ये कहना है कि वो गांव भी चिन्हित होने चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पर तो 6,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, इसलिए सबका ध्यान इसमें। लेकिन जो गांव में नुकसान हुआ वो ज़्यादातर गांव है MCT के नीचे। तो इसलिए इस प्रकार का जैसे उन्होंने इन रूटों का अध्ययन किया, अभी तक उसका ठीक ढंग से वो नहीं हुआ। लेकिन इसी प्रकार MCT वाले का भी अध्ययन होना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए तुम्हारे ऊपर से मतलब 1991-1999 के अर्थक्वेक के बाद दरार पड़ी है, तो उसको चिन्हित करके लोगों को सावधान किया जाना चाहिए। और जहाँ तक मेरा निवेदन है कि वार्निंग सिस्टम जरूर विकसित हो। ये ठीक है कि मौसम वाले कहते हैं कि साहब उत्तराखंड में बारिश है, पर हम ये कहते हैं कि जैसे ऊपर का हिमालय है और नीचे का हिमालय, बीच का इलाका जो है वो ज़्यादा बारिश वाला इलाका है। तो उन गाँवों में हम बता सकते हैं भाई, यदि मौसम विज्ञान वालों ने कह दिया कि 100 मिलीमीटर बारिश आएगी, क्योंकि बादल आज हर कोई पता है कि बादल फट गया, बादल फटने के लिए 100 मिलीमीटर बारिश 1 घंटे में आएगी, तब उसको बादल फटना कहा जाता है। आज तो 20 मिलीमीटर बारिश भी आती है। तो जैसे आपने देखा होगा कि लेह लद्दाख में जो 2 साल पहले लेह पूरा नष्ट हो गया था, तो वहाँ पर 43 मिलीमीटर बारिश आई, वो बादल फटना नहीं था क्योंकि हरितमा थी नहीं। तो इस प्रकार का आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है, वो आम लोगों तक कैसे पहुँचाया जाए, इस पर भी विचार होना चाहिए। और बाकी धीरे धीरे अन्य अध्ययन भी होना चाहिए। और आज हमारे सामने इसलिए भी चुनौती है हिमालय के लिए, क्योंकि जो मौसम में उतार चढ़ाव, एक तो ग्लोबल वार्मिंग की बात है, दूसरा लोकल वार्मिंग। पहले बद्रीनाथ में हिमालयन गजेटियर में लिखा है कि कुल साल भर में 10,000 यात्री था, आज 30,000 यात्री प्रतिदिन जा रहे हैं।
तो उस पर भी मतलब हम ग्लोबल वार्मिंग को वो न करें, ऐसा ही केदारनाथ में। फिर कई प्रकार के संबंध हैं जो हमारे लोकल वार्मिंग का भी ग्लोबल वार्मिंग का, तो इस प्रकार के भी अध्ययन होना चाहिए। जो विज्ञान से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं वो तो कर रही हैं। मैं समझता हूँ कि आपका जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है वो भी इसमें पहल करे, और जो अथॉरिटी है उसके सामने एक्सरे की तरह पूरा हिमालय और देश का डिजास्टर का क्षेत्र आना चाहिए। फिर आप यहाँ से राज्यों को सावधान कर सकते हैं कि किस किस प्रकार से वो होगा। तो मैंने बहुत समय ले लिया, ये करके मैं आपको समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। Thank you. May I please call upon Shri M. Shashidhar Reddy, Vice Chairperson of NDMA, who is our chief guest today, to give his inaugural address. Shri Chandiprasad Bhattji, Shri Matto, Dr. Satyendra, my esteemed colleagues from the NDMA, Mr. Nandakumar, Dr. Muzaffar Ahmad, Dr. P.K. Mishra, Anil Sinha, our very distinguished representatives of the armed forces, the ITBP, various other organizations, the India, officers from the Uttarakhand state government, ladies and gentlemen. What happened in Uttarakhand, unprecedented as it has been, for a disaster management should be seen as an opportunity to learn. And I think this is precisely what we are here for. We've lost thousands of people. There has been a tremendous amount of loss, setback to the development process in the hilly areas of Uttarakhand. And as Bhattji has just mentioned, the suffering of the local people, which has also been so enormous, besides the thousands who were stranded for days together and were ultimately rescued in the biggest rescue operation in a disaster situation in our country, and probably one of the biggest anywhere in the world. I think to begin with, we must salute our armed forces, the Army, the Air Force, the ITBP, and the NDRF for their valor and commitment. And I think the entire nation feels proud of their mission. NIDM has as a part of its mandate documentation as an important part of its mandate. And I think for NIDM also, I do not want to get into what was done in the past. But I think this should be also a challenge, and I'm looking forward to a very detailed documentation. I think people like Chandivarji, the wealth of information that he has, and listening to him this morning, it was a very brief
account of what has been happening in those parts over the last 60 years. I think we should have all his experiences. Somebody sit down with him, spend a day or two. Now he's referred to some studies that were done, some initiatives of the past. What is happening? Because I recall earlier as a member of the authority when I was dealing with one of the subjects that I had to deal with cyclones. And I had come across a report prepared by one of the IITs for the government of Andhra Pradesh to do a study on the forests in Andhra Pradesh. When I called for that report, the state government was unable to give me a copy of that. Bhattji has also referred to the cyclones in Andhra Pradesh. In 1990, the biggest ever evacuation in human history of more than 6.5 till date, more than 6.5 lakh people were evacuated to safe places. And that is the reason why the number of deaths, in spite of all the coastal districts being devastated by the cyclone, the loss of life could be kept under 1,000. And after that, there was the World Bank project taken up. For the first time, the state government directly negotiated with the government, with the World Bank for a $380 million loan for a cyclone emergency reconstruction project. When I wanted a report on this from the state government, they were not able to give it to me in 2006. It was by chance that Dr. K.J. Ramesh, who is now an advisor in the Ministry of Earth Sciences, who had earlier worked with one of the World Bank projects, subsequent World Bank projects in Andhra Pradesh, told me that when he handed over charge, there was a steel cupboard, and in the top shelf, there is a copy of this report of the World Bank project. And I got a copy retrieved in this manner. This is the sorry state of affairs that we have. And I think documentation in a very authentic manner has to be taken up in the right earnest. Very often this is done because when we document, in the guidelines that were released, in which I was responsible for, some of the subjects that I was responsible for, I said documentation is extremely important because we talk about the success stories. Very often they get highlighted, and they should be. Of course, the media sometimes plays a different kind of role, and that is also welcome. And these are they try to bring out the failure stories. And there is a lot of confusion about the consequences of inaction, which are also very important. I think all these need to be documented with objectivity. I appreciate what Dr. Mattu said. The facts should come out, not to defend anyone or to find fault with anyone. But I think we owe it to the people to come up with facts, learn from these experiences, so that we can be better prepared for the future. A lot has been said about the observational and forecasting capabilities. In fact, on the 19th of June, I had convened a meeting at the NDMA
the DG of the IMD, officers from the CWC, to look at what the present status of the observational and forecasting capability was, and then what needs to be done in future. We have also subsequently reviewed with the Secretary, Ministry of Health, Earth Sciences. They have a plan which I think needs to be improved upon. We need to have a world-class observational and forecasting capability to cover the entire Char Dham Yatra route. And I think this is something that needs to be taken up in a mission mode. Incremental increases are not going to get things done in time. We need to be working in that direction. Of course, a lot has been said about our communication infrastructure. I think during the entire operations, we managed to get about 105 satellite phones to this, available to the state government, and they were temporarily imported by Inmarsat. I had a meeting with the executive chairman of the Inmarsat subsequently, and then I asked them to tell us what the bottleneck is right now, because this needs to be clear. We need to be in a position, because communication is extremely important. When all others fail, it is the satellite communication that will be available. We will take this up to the Government of India to see that we will be in a position, maybe initially the Home Ministry would have about 200 of these satellite phones to be made available at the shortest notice to the state administration wherever such things become necessary. Looking at the manner in which the road connectivity was badly affected. Now, I think what we need to learn from the experience in Uttarakhand is to be prepared for a situation of a possible earthquake of magnitude 8 or higher in the Himalayan, anywhere in the Himalayan region. It has been forecast by international experts that whenever such a thing is to happen, would happen, God forbid, we don't get to see such a day, but then we have to be prepared. It has been forecast that we'll lose up to 1 million people. There will be 1 million people dead should there be an earthquake of a magnitude 8 or more anywhere in the Himalayan region. To this effect, keeping this in mind, particularly the vulnerability of the Himalayan states, from the northwest to the northeast, NDMA has been, last year, 2012 and 13, we for the first time, we conducted a multi-state preparedness campaign in the northwest. Haryana, Punjab, Chandigarh, and Himachal were the 4 participating states. The scenario for this exercise was prepared by experts from the IIT
different IITs in India. 2013-14, we are planning this in the Northeast. All the 8 northeastern states are going to be a part of it. Now, should there be an earthquake of that magnitude anywhere in these hilly areas, what kind of road connectivity challenges that we would face? I think the experience in Uttarakhand should help us understand what our requirements would be and how we need to be prepared to deal with such a challenge. We found that heavy equipment, I think even today we have not been able to move a JPC to Kedarnath. On the 28th of June, when I was in Dehradun along with the Honorable Union Home Minister, when he reviewed the situation there, we thought that in the next few days it would be possible to have this heavy equipment shipped, airlifted, but I think it has not happened so far. So how do we deal with situations like this in future? We need to find some answers to such things. The shortage of bridges, temporary bridges. The DRDO has prepared for the use of the armed forces some aluminum composite light bridges. We need to work with them and see how such contingencies can be met in future. One of the other challenges that we had was making available essential commodities to people in the villages which are totally cut off. We will need to prepare a plan where enough supplies can be located at decentralized storage facilities so that the difficulties that we faced in Uttarakhand this time can be avoided in future. Of course, airstrips, helipads are something that we need to be seriously planning for. If you look back, the kind of airstrips that are already available in different parts of the country, sometimes we are surprised at the foresight of our predecessors who planned airstrips at such locations. I mean, we are not even aware of it. Of course, should there be an emergency, I think all these come out, but I think in the hills, coming to the NDRF, over the last few years, NDRF has become the base of NDMA. Anywhere in the country, from collapse of a single building to huge events like this, NDMA has been playing a major role. But I think when we, in future, have to confront major challenges like what we have seen now, it will always be the armed forces of this country. For the Indian Air Force, even for the NDRF, the Air Force provides a lot of support to the armed forces of this country that will have to play a major role. And I think they need to look at
disaster relief rigs to be, along with some equipment. This was also pointed out by Mr. Madhu during his observations. I think this is also something that needs to be planned. Of course, we've had initially some issues of coordination. Then the Government of India, the Home Ministry, decided to have one of our members, Mr. Dugal, to be looking at this. His experience throughout should also provide us a lot of insight, and probably at the end of all this we need to be putting some SOPs in place so that whenever we need and large issues of coordination are to be looked at, these SOPs will come in very handy. One other thing that what he has mentioned, and that there is also a need for a lot of studies to be taken up. I think we all need to sit together. We have a lot of our institutions capable of carrying out these studies, and how and then come up with extensive studies on various aspects of what happened in Uttarakhand and how these studies will help us in getting better prepared to deal with such situations in future. The study of the glacial lakes that Bhattji has mentioned about, this also needs to be looked at. So I would expect NIDM to really get into every aspect of what was done, what was not done, what could have been done, based on I think any time or effort on this, we should not, that should not become a constraint. We should be able to get